अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस अनदर लिटरेरी पीरियड दैट इज़ द रोमांटिक पीरियड. It started in 1785 and ended in 1832. आज के लेसन में हम लोग रोमांटिक पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। इसके स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर पे काफ़ी डिबेट की जाती है और डिफरेंट ईयर्स बताए जाते हैं जब रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ या फिर एंड हुआ. So let's discuss. Now there is a debate, when did romantic age started? There are three different years. Number 1, 1785, the opening movement of age of sensibility. Secondly, 1789, the French Revolution. Then we have 1798. Romantic age started with the publication of lyrical ballads. If we talk about when did romantic age ended, then we have three different years: 1830, 1850, 1890. तो अगर रोमांटिक पीरियड के टाइम पीरियड को देखा जाए तो डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट बिलीव्स हैं. कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि रोमांटिक पीरियड जो है 1785 जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी तब स्टार्ट हुआ. कोई कहते हैं कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टार्ट हो गया, और कुछ का मानना है 1798 जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे तो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था. इसी तरीके से रोमांटिक पीरियड के एंडिंग ईयर पे भी डिबेट होती है. कुछ का मानना है 1830 से पे एंड हुआ, कुछ कहते हैं 1850 और कुछ का कहना है कि 1890 पे एंड हुआ. Now let's talk about the romantic period. Romantic period is also called Age of Revolution. The American Revolution of 1776 and the spirit of liberty, equality, and fraternity of French Revolution made it a time of hope. Romantic period is the most fruitful period in the history of English literature. रोमांटिक पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. रोमांटिक पीरियड के दौरान अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और रोमांटिक पीरियड को इंग्लिश हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल पीरियड माना जाता है क्योंकि डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट वर्क प्रोड्यूस किया और अच्छा खासा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था. नाउ लेट्स डिस्कस थ्री डिफरेंट रेवोल्यूशंस दैट अकर ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड. रोमांटिक पीरियड के दौरान तीन तरह के रेवोल्यूशंस आए. नंबर 1, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नंबर 2, अमेरिकन रेवोल्यूशन. नंबर 3, फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेट्स डिस्कस them one by one. फर्स्टली वी हैव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कहा जाता है सडन चेंज को या फिर कंप्लीट चेंज को. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ ट्रांजिशन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन ग्रेट ब्रिटेन, कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. In the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान नए प्रोसेसेस, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया. वहाँ पर ब्रिटेन, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में डिफरेंट मशीनरीज को यूज़ किया गया, डिफरेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाया गया था. और ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 1760 से और कहीं 1820 या फिर 1840 के दरमियान जाके रुक गया. Secondly, we have American Revolution. The American Revolutionary War, also known as the Revolutionary War or American War of Independence, secured a United States of America independent from Great Britain. Fighting began on April 19, 1775, followed by the Declaration of Independence on July 4, 1776. अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली एक वॉर हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, जिसमें अमेरिका को डिक्लेयर किया गया था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट. और इस वॉर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1775 से, जिसमें अमेरिकन की ये डिमांड होती है कि उनको एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और 1776 में जाके उनको इंडिपेंडेंस मिलती है. थर्डली, वी हैव फ्रेंच रेवोल्यूशन. The French Revolution was a period of radical political and societal change in France that began with the States General of 1789 and ended with the formation of French Consulate in November 1799. फ्रेंच रेवोल्यूशन ना सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज था बल्कि सोसाइटल चेंज था. फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा सारी राइट्स के बारे में बात की गई थी. उनका बेसिक मकसद था कि सोशल चेंज लाया जाए, सोसाइटी में चेंज लाया जाए.
और ये स्टार्ट हुआ था 1789 में और एंड हुआ था 1799 में. Now we will be talking about the general background of Romantic period. As we discussed earlier, French Revolution, now we will be discussing few more points about French Revolution. French Revolution started in 1789 and ended in 1799. French people were influenced by liberty, equality, and fraternity. Not only France, but other European countries were also influenced by this idea. Among these, Britain was the most influential country as it brought democracy and secularism. फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली फ्रांस में एक सोशल चेंज लाना चाहता था, सोशल ऑर्डर को तब्दील करना चाहता था. सोशल मूवमेंट्स एट दैट टाइम देयर वर डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स लाइक एबलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, पुअर रिलीफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस. उस टाइम पे डिफरेंट तरह के सोशल मूवमेंट्स चल रही थी जिनके पास अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे. इंक्रीज इन मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी. उस टाइम पीरियड पे लोग काफ़ी ज़्यादा मशीनरी की तरफ जा रहे थे, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही थी और नई मशीनरीज़ को प्रैक्टिकल यूज़ में लाया जा रहा था. देन वी हैव इंक्रीज्ड Irish immigration. One of the problem in which Irish were immigrating, and for that reason there was clash between Irish and Britishers. It was time of unemployment. It was a time of economic deprivation in 1819. Irish immigration बढ़ती भी जा रही थी. इस वजह से Irish और Britishers के बीच में जो relations हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे. उनके बीच में clashes आ चुके थे. उस टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती भी जा रही थी और उन्होंने इकोनॉमिक डिप्राइवेशन फेस किया 1819 में. Working class was struggling to get education, emancipation of Catholics. Tipu Sultan was killed in 1799 as it was a big hindrance to East India Company. और जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो किसी तरीके से एजुकेशन हासिल कर सके. कैथोलिक्स को रिलीव किया गया था और टीपू सुल्तान को मार दिया गया था 1799 में. That was the general background of Romantic period. Now let's discuss revolt against classical school. It had been started by writers like Chatron, Collins, Gray, Cowper that reached its climax during Romantic period. And some of the greatest and popular English poets, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley and Keats belong to this period. अब इसमें इस तरह हुआ था, एक क्लासिकल स्कूल से शिफ्ट जा रहा था रोमांटिक स्कूल की तरफ. ये स्टार्ट तो चैट्रॉन, कॉलिंस, ग्रे और कॉपर ने किया था. इनके साथ कुछ और भी राइटर्स थे जिन्होंने क्लासिकल स्कूल से स्विच करना चाहा था रोमांटिसिज्म की तरफ. लेकिन इसका क्लाइमेक्स रोमांटिक पीरियड के दौरान आया जब कुछ इंग्लिश पोइट्स ने काम किया जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेले एंड कीट्स. इन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए कि वो क्लासिकल स्कूल से स्विच करे रोमांटिक स्कूल की तरफ. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर मोस्ट important figures of romantic age. Both poets were famous for their lyrical ballads. काफ़ी लोगों का मानना है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जैसे ही लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया था तो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था. इसी वजह से वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स माना जाता है रोमांटिक पीरियड का. वर्ड्सवर्थ्स नेचुरलिज्म. इट इंक्लूडेड लव फॉर नेचर एज वेल एज फॉर मैन लिविंग इन सिंपल एंड नेचुरल सराउंडिंग्स. Thus he speaks for love that is in home where poor men live. वर्ड्सवर्थ ने नेचुरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था और वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने लव फॉर नेचर और लव फॉर ह्यूमन बीइंग शो करवाया. और वर्ड्सवर्थ ने कॉमन मैन, कॉमन प्लेस के बारे में बात की. कॉलरिज सुपर नेचुरलिज्म. इट एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन विजिबल वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड विच इज़ अनसीन. कॉलरिज ने सुपर नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कनेक्ट किया विजिबल वर्ल्ड को इनविजिबल वर्ल्ड के साथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोमांटिक लिटरेचर. द लिटरेरी आउटपुट ऑफ रोमांटिक एज was dominated by imagination. During romantic age, writers worked on 4 different genres. Number 1, poetry. Number 2, non-fiction. Number 3, fiction. Number 4, drama. रोमांटिक पीरियड के दौरान जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था उसमें एक इमेजिनेशन का एलिमेंट पाया गया. जितनी भी राइटिंग्स थी उनके जो राइटर्स हुआ करते थे वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे.
रोमांटिक पीरियड के दौरान तकरीबन चारों जनरस पे काम किया गया था। पोइट्री एक ऐसा जनरा था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और सबसे ज़्यादा काम पोइट्री में ही किया गया था। नॉन फिक्शन में चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैज़लिट ने काम किया, फिक्शन में जैन ऑस्टन और वेल्टर स्कॉट ने काम किया। और ड्रामा एक ऐसा जनरा था जो कि बहुत ज़्यादा वीक था, उस पर इतना ज़्यादा काम तो नहीं किया गया, थोड़ा बहुत काम किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी फिगर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। Writers of Romantic period are divided into two, first generation and second generation. Let's discuss them one by one. First generation, that includes Wordsworth and Coleridge. They shared the same ideas of poetry and imagination, but the subject of their poetry was very different. Wordsworth was more didactic, instead, Coleridge's imagination moved in a fantastical or dreamlike world. फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आते हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों पोइट्स थे, वो पोइट्री किया करते थे। उनकी पोइट्री में इमेजिनेशन का एलिमेंट पाया जाता था, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करते थे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्ड्सवर्थ जो है नेचुरलिज्म पे काम किया करते थे और कॉलरिज जो है वो सुपर नेचुरलिज्म पे काम करते थे। दे वर इन फेवर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोनों ही पोइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन को फेवर करते थे। Their poems were easier to be read, the language is easy. They wrote songs and ballads, they used imagination. वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज में सिमिलरिटी ये थी कि वो दोनों इमेजिनेशन का एलिमेंट यूज़ किया करते थे अपनी राइटिंग्स में। उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, बैलेड्स लिखे और उनकी पोइट्रीज़ को अगर पढ़ा जाए तो उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ की गई है। सेकेंड जनरेशन, इट इंक्लूड्स बायरन, शेले एंड कीट्स. They wrote more classical poems like odes, sonnets, and elegies. They abandoned the popular genre in favor of more traditional one. सेकेंड जनरेशन में बायरन, शेले और कीट्स आते हैं। इनके जितना भी वर्क होता था वो क्लासिकल पोएम्स हुआ करती थी, जैसे ओड्स, सॉनेट्स एंड एलेजीज। इनकी पोएम्स में ट्रेडिशनल फ्लेवर आता था, ट्रेडिशनल टच आता था। इन देयर पोएम्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ आर्किजम्स. The language is difficult, elevated, and refined. They moved to more prophetic themes and considered themselves like prophets. They wanted to bring the truth to the mankind. बायरन, शेले और कीट्स की जो पोइट्री थी वो क्लासिकल थी, उसके अंदर ट्रेडिशनल स्टाइल था और ये लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। इनकी पोइट्री में ट्रुथ का एलिमेंट पाया जाता था और वो मैनकाइंड को डायरेक्ट करना चाहते थे। If we talk about the poets of the Romantic period, they were divided into three groups. Number one, the Lake group. Number two, the Scott group. Number three, the younger group. Let's discuss them one by one. Firstly, we have the Lake group. The Lake poets were a group of English poets who all lived in the Lake district of England and worked in close cooperation. The Lake group include William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey. Among them, only Wordsworth was born there and rest lived there. लेक ग्रुप में 3 पोइट्स आ जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। ये तीनों लेक के पास रहा करते थे और अपना काम लिखा करते थे। इनमें से सिर्फ वर्ड्सवर्थ जो है उनकी पैदाइश लेक डिस्ट्रिक्ट में थी, बाकी के जितने भी राइटर्स हैं वो वहाँ रहा करते थे और काम लिखा करते थे। तो इस वजह से इन तीनों राइटर्स को जो है लेक ग्रुप कहा गया है। सेकेंडली वी हैव द स्कॉट ग्रुप, द ग्रुप ऑफ पोइट्स हु ऑल ब्रिज द ईयर्स विच प्रेसिडेड द सेकेंड आउटबर्स्ट ऑफ हाई क्रिएटिव एक्टिविटी इन द रोमांटिक पीरियड, थॉमस कैंपबेल एंड थॉमस मोर। स्कॉट ग्रुप में 2 पोइट्स आ जाते हैं, थॉमस कैंपबेल और थॉमस मोर, जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी के बाद काम किया। Thirdly, we have the younger group. The group is named as the younger poets because incidentally these 3 poets of second generation of Romanticism died young. That include Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats. इन 3 पोइट्स को यंगर ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही यंग एज में वफात पा गए थे। लॉर्ड बायरन died at the age of 36, Percy Bysshe Shelley died at the age of 30, John Keats died at the age of 25. Now here we have some prose writers. Charles Lamb, Thomas de Quincey, Matthew Gregory Lewis,
Mary Shelley, Jane Austen, William Hazlitt, Mrs. Anne Radcliffe, Frankenstein, Percy Bysshe Shelley, Sir Walter Scott. Here we have some literary works: Pride and Prejudice by Jane Austen, Sense and Sensibility by Jane Austen, Frankenstein by Mary Shelley, Emma by Jane Austen, Mansfield Park by Mary Wollstonecraft, Northanger Abbey by Jane Austen, The Heart of Midlothian by Walter Scott, Childe Harold's Pilgrimage by Lord Byron, Songs of Innocence by William Blake, The Mysteries of Udolpho by Anne Radcliffe. This is all about the Romantic period in which we discuss the general background, literary figures, and literary works. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share, and subscribe. Thank you.